Today we have to discuss about the swing component, Java swing component that we have to discuss now. So the in the character user interface is an application. A user needs to remember the command to work with the application. Okay, so as we know that the CUI is providing you character user interface, GUI is providing you graphic user interface. That already we know it. But we are using a AWT package. The similar way, another package is available which is used for designing Java application. तो से जो AWT ଆଉ swing ଭିତରେ କ'ଣ difference ରହିବ ନା AWT जो package ଟା ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ graphical wise it is just like little bit lower, but here you can just having kind of 2D effect, some kind of effective button is there. Everything is same, command is same. In AWT package we are using just A frame, but here we are using as a J frame. Okay, we are using a J frame. Okay, in swing we are using J frame. In AWT we are using frame. In what AWT we are using dialog. In frame we are using J. Only J is added. ଆଉ କିଛି difference ନାହିଁ. ଆମେ ଆଦେରେ କେବଳ J ଗୁଡାକ ଏଠି added ହେଇଛି. ବୁଝିପାରିଲ? मेनू बार AWT रे मेनू बार ଅଛି ଏଠି ଆମର ହେଇଯିବ J मेनू बार. ଏଠି J मेनू ରହିବ, J मेनू आइटम, J लेबल ରହିବ, J टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स. बुझिला? So these are the components we are using in swing component. In swing component, it is called the J frame. Normally we know that the frame, but here we are using J frame. Okay, so it works as a window that is used to place the other component. माने हमें जो बटन गुड़ाक ऐड करथले, चेक बॉक्स गुड़ाक जो सब ऐड करथले, सेटा होचे हमें फ्रेम रे ऐड करथले, एटा होचे जे फ्रेम. बुझिला? आज्ञा. So here we are using J dialog. J dialog is used. It is just like a message. It is asking you that to prompting you to enter some value. It works as a dialog box that is used to display the information to the user or prompt the user for a response. It enable you to create the modal and modeless dialog boxes. Modal dialog box means ଯେମିତି କି ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି save as dialog box ଯେତେବେଳେ open ହଉଛି, so it is not allowing you to do the other work. Suppose ଗୋଟେ word ଖୋଲୁଛି, ରୋମେଶ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛ ଜାଭାର? ନା ସାର୍, ଟିକେ କର, ମାନେ ଆଉ ତୁମକୁ ମତେ ଯଦି କହିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ. ନା ସାର୍ ମୁଁ କରିବି ସାର୍, କରିବି. ନାଇଁ ତମେ କର, ଏଟା ସରି ଆସିଲାଣି ନା, so you have to do it. ଯଦି କିଛି problem ହେଲା you can take the help of me. ମୁଁ any time ତମକୁ ନେଇଯିବି remote ରେ. Okay, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍. ସାର୍ ମତେ ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେ ଇଏଟା ଦେବେ ବୋଲି ଆଉ ଦେଲେନି ଯେ, ସେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଟାଇପ ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ. କାହାର କରିବ? ସି ର? ନା ଜାଭା. ହଁ ମୁଁ କାଲି ପଠେଇଦେବି ହେଲା. ମାନେ ପୁରା ବିଗନର ରୁ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଯେତେ ଯାଏ ପଢା ହେଇଛି ସେଇ ଲେଭେଲ ଯାଏ. ହଁ ଓକେ ଓକେ. ମତେ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ, ମତେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଟାଇମ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଗୁଡା ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି. ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି. ଆଜ୍ଞା. ଗୋଟେ ମିନିଟ୍. ଆଜ୍ଞା.
Okay, so this is एटा कुहा जिवो हमरो modal dialog box. Okay, so modal dialog box is what ना मु जते बेले मोर ए जो डायलॉग बॉक्स टा ओपन होउची हैला सेते बेले सी हमको इंटरैक्ट करिवो नै हैला हमको इंटरैक्ट करिवो नहीं जे अन्य कोनोसी एप्लीकेशन सहित काम करिवा पई माने मु एटा ओपन हैला मु जदी चाहिबी आउ किछि एप्लीकेशन सहित काम करिको देखो एटा बुली की रहउची बुझी पाछो सर कोनडा बोली की रहउथि ए देखो ए बुलुनी प्रोसेसिंग गोटे होनी देखो कर्सर अच्छा टा अच्छा देखो मते मु हाँ एटा काहे कि हल्ला कहले এই যে এটা হচ্ছে মোডাল ডায়লগ বক্স র অর্থ হচ্ছে যে পর্যন্ত এই ডায়লগ বক্স র ওয়ার্কটা ওভর ন হচ্ছে সে মতে আউ গোটে আপ্লিকেশন সহিত ইন্টারাকশন করবাকু দব না বুঝিলা अच्छा हाँ हाँ बुझिल বুঝি হচ্ছে हम्म আউ গোটে হচ্ছে মোডলেস ডায়লগ বক্স কাম হচ্ছে সপোজ এটা রহিলা মোডলেস ডায়লগ বক্স ধর মু সপোজ কিছু জিনিস সর্চ করিবাকু চাহুছি তো দেখ মু এটি সপোজ সর্চ করিবি আইএসও মেসেজ ଅଛି देख ये दीटा एप्लीकेशन सहित इंटरेक्शन हम ऑफ फाइंड फ्रॉम ऑफ ओके ये देख हाईलाइट कला माने मोर फ्रंट एंड भी काम करछि बैक एंड भी काम करछि एटा होछि मोडलेस डायलॉग बॉक्स ओके बुझि पाइलो आज्ञा मनोरंजन संगीता बुझी हला राउथ कोन मोडाल डायलॉग बॉक्स माने आमे जेपर्यंत एमती गोटे डायलॉग बॉक्स आसीबो एटा जेपर्यंत क्लोज न होइछि सी हमको इंटरैक्शन करबा को दबनी अलगा एप्लीकेशन सहित काम करिया पई बुझिला अच्छा बुझी होछि हां आज्ञा तो एटा होछि मोडल डायलॉग तार मोडलेस ता हबो हमर जेमति हमर काम जेमति कि हमें कोन करिवा हमें कहि परिबा मोडलेस ता एटा होछि मोडलेस माने हमर बैक एंड रे भी काम करिवो फ्रंट एंड रे भी काम करिवो बुझी होछि बुझी होछि यस आज्ञा माने मु एठी सर्च करूछि से मते सर्च करके देखेबा आईएस एटा देखेलानी मु धर एठी सपोज चूज करी सपोज जावा गोटे चूज करुचे दैट इज सर्चिंग फॉर मु डाउन रू सर्च करी डाउन वर्ड्स रे सर्च करी देख जावा आसिला बुझी होची माने हमर डायलॉग बॉक्स रे काम करिवो प्लस टेक्स्ट बॉक्स रे भी काम करी देखैबो बुझी हला ए जो आज्ञा सर फाइन टा को कुआ जीवो हमर मोडलेस डायलॉग बॉक्स तो जे डायलॉग बॉक्स दीटा रे काम करिवो गोटे होची मोडल आ गोटे होची मोडलेस then J panel it is an intermediate component that is used to organize the group of other component within the window ला से within the window से group of other component को मते grouping करिवो J panel टा तो next होची J tab pane it is used to create a multiple tab pane एटा multiple tab से create करिवो tab 1 tab 2 tab 3 एटा multiple tab से create करिवो this pane can hold other component okay एटा other component को hold करिवो you can switch between this pane by clicking the respective tab हमें जो टैब को क्लिक करिवा से ऑटोमेटिक मूव करिवा नेक्स्ट टैब को जीवा पाए बुझी होची माने डिफरेंट विंडो गुडा को बा डिफरेंट यूजर इंटरफेस गुडा को एठी रहइबो जेमते कि तमे एतला मोबाइल ओपन करूचो व्हाट्सएप जदी ओपन करूचो सेठी गोटे कॉलिंग डिटेल रहउची गोटे मेसेज बॉक्स रहउची बुझिला निजर व्हाट्सएप ओपन कर तमे देखि परिबो सेटा होची टैब टा ताको हमें टैब कहि परिबो नि व्हाट्सएप ओपन करचो देखौची चैट तापर स्टेटस तापर कॉल माने तीनटा जक पेज गोटे यूजर इंटरफेस रे ओपन होउची बुझिला एटा को जो टैब एप्लीकेशन बुझिला आज्ञा सर ओके
एटा होची मेनू बार जेमति कि हमें मेनू सब ऐड करबा एटा हला मेनूज एटा जो ऊपर टिके हाइलाइट जोडा है कि आसे सेटा होची मेनू बार फाइल एडिट एग्जिट एटा होची मेनू आ ये जो तळे जोडा देखोची न्यू ओपन होची एगुडा होची मेनू आइटम बुझियला आज्ञा तापर होची जे लेबल इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और इमेजेस by default a label that display the text is left aligned and label that display the images is horizontally centered माने मु जो लेबल गुडा कठी ऐड करबी लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम एगुडा हला गोटे गोटे लेबल बुझी होची तो ए लेबल रे मु जहां भी एठी डिस्प्ले करबी ओके सो जहां भी मु एठी डिस्प्ले करबी माने इट इज डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ अदर कंपोनेंट माने मु जो कंपोनेंट गुडा को सब ऐड करबी से शो करिवो जे अलगा कंपोनेंट रो कोन काम फर्स्ट नेम एंड देन टेक्स्ट बॉक्स लास्ट नेम देन टेक्स्ट बॉक्स ओके तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एटा मोर ऐड करी देखिबो बुझिला सर एटा हमें जोडा पढु छै एटा को एप्लीकेशन ऊपर पढु छै ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमें जो यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग पई एटा पढा होची हां 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 आदर जे लेबल जोडा यूज करा होची जेंते हम लिखा होची लॉगिन आईडी सो इट इज डिस्क्राइब लॉगिन आईडी टा मु कोडी पास करी पासवर्ड टा मु कोडी पास करी बुझे होची आज्ञा सर then j text field it is used to insert edit a single line or text मु गोटे सिंगल लाइन एठी पास करबे और मल्टीपल लाइन भी एठी पास करी देखै परिबे बुझला सॉरी सिंगल लाइन केवल हबो सपोज लॉगिन आईडी मु पास करबी मल्टीपल लाइन हेले हमको एडाला सिंगल लाइन पास करिवा this one it is called the text area रे कोन हबो जदी मु किछि एड्रेस पास करबी जदी मल्टीपल लाइन मते एंटर करिवार अछि मु एटा टेक्स्ट एरिया टा लिखिबी बुझे होछि आज्ञा then j checkbox it is used to display the state of something by selecting or deselecting the checkbox गुडा को हम एटी क्लिक करिवा सेटा क्लिक करे पुनी ऑन क्लिक हबो एगुडा हला हमर checkbox it is used to display the state something by selecting or deselecting the checkbox क्लिक कले सिलेक्ट हबो पुनी ऑन क्लिक करे deselect हे जिवो बुझियला आज्ञा सर Okay. तापर एटा होची रेडियो बटन माने हम जदी मल्टीपल ऑप्शन अछि गोटे ऑप्शन चूज करिया पे हम यूज करिवा रेडियो बटन ओके then एटा होची लिस्ट बॉक्स इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ आइटम सपोज गोटे मते जनरल लिस्ट यूज देखेला से लिस्ट जदी मु मल्टीपल आइटम टा चूज करबी एटा को जो हम लिस्ट बॉक्स इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ आइटम दैट एनेबल द यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर आइटम फॉर द लिस्ट वन रो मोर आइटम जदी मु यूज करबा को चाहूची मु लिस्ट बॉक्स यूज करबी दिरेला फ्लोरिडा न्यूयॉर्क जदी वन रो मोर टाइम हमें यूज करबा सेटा हमें देखिबा जे लिस्ट बॉक्स तो लिस्ट बॉक्स हमें का को जो ड्रॉप डाउन लागो को छै मैं ड्रॉप डाउन टा हला कॉम्बो बॉक्स एटा होची लिस्ट बॉक्स माने गोटे मल्टीपल आइटम थिबो जंति कि हमको कहबो माने लिस्ट कोन डायरेक्ट शो करियो माने किछि मारिया को पड़ियो नै ना डायरेक्टली से डायरेक्ट शो करिवो एंड यू कैन चूज द मल्टीपल आइटम हियर अच्छा मल्टीपल आइटम चूज करियो हां हां कॉम्बो बॉक्स रे किंतु सिंगल आइटम चूज करियो तो काहे ना सेटा ड्रॉप डाउन जेतु हां हां कॉम्बो बॉक्स से ड्रॉप डाउन The J combo box it is used to display the combination of text field and a drop down list. It enable you to type or select the value from a list. Okay, so it has a drop down list, so you can choose the multiple item here. Okay, ये drop down list. Here, माने multiple item देखिए वो ताबितर हमें गोटे item choose करियो. ये डाला combo box. बुझिला? आ गया सर Again.
J button, it is used to provide a clickable function that enable you to initiate a command. माने मु गोटे फॉर्म रे किछि डाटा देली से डाटा को मते सबमिट करिवार अछि. ओके तो से सबमिट करिवा पई मु यूज करबी कोन J बटन मु यूज करबी. It is used to provide a clickable functionality that enable you to initiate a command. Okay, so ଗୋଟେ initiate command to initiate करिवो. So that is we are using J button. Okay. आज्ञा. The J option pane, it is used to display the dialog boxes that prompt the user for a value or giving a information like do you want to save or do you want to delete. So that we are using J option pane. Okay. आज्ञा सर. Yeah. So these are all the components we are using. And next I move to the rest part of your user interface. Once you have created a user interface, of the application, it is important to arrange them properly to enhance the look and feel of the application. To arrange the component in a container, you can use the various layout such as flow layout, border layout. These layout have relative position, place and component on the container. ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲେଆଉଟ୍ ଦବା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଟ୍ ଲେଆଉଟ୍. ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ. ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନ୍, କୌଣସି ଯୋଉ ବଟନ୍ ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ କିମ୍ବା କମ୍ବୋ ବକ୍ସ ଆମେ ଆଡ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ବକ୍ସ ରେଡିଓ ବଟନ୍ ଯୋଉ ଆଡ୍ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନରେ ମତେ ଦେଖେଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଲେଆଉଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ସେଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ ୟୁଜ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଦ layout of the container. Some of the layout manager classes we are using. One is flow layout, border layout, grid back layout, a box layout, and group layout. So these are the layout we are using. Already we cover flow layout and grid back layout. Okay. Then flow layout manager place the component in the sequence one after other. এটা আমি পড়িছে মু নেক্সট কো পড়ে যাଉଛି বর্ডর লেআউট भी পড়িলে গ্রিড লেআউটটা পড়িছে গ্রিড ব্যাক লেআউট. ওকে, the grid back layout place the component in a grid of row and column. माने जो component गुडा को ऐड करिवो से रो आउ कॉलम फॉर्मेट रे ऐड करिवो. allow the specified component to span in the multiple row and column. आमे जदि नॉर्मल ग्रिड लेआउट ता केवल यूज करिवा से कंटीन्यूअसली रो एंड कॉलम फॉर्मेट रे रखिवो. किंतु जदि आमे ग्रिड बैक लेआउट यूज करिवा ताले से कोन करिवो ना ग्रिड ऑफ रो रे रहिवो. रोटा पूरा आमे गोटे रो रहिला ता भीतर किछि स्पेस दवा पुनी आ गोटे रो रखिवा पुनी किछि स्पेस दवा एमती स्पेस बाय स्पेस आमे काम करिवा. बुझियला बुझियला. आज्ञा सर. Okay. Okay, so the grid back कार डाउट अछि किछि आ भीतर ग्रिड बैक लेआउट रे. No, sir. Then grid back layout class provide the सर जो ग्रिड बैक लेआउट टा एटा कोन गोटे क्लास माने क्लास रे जीवो एटा. you can say it is a predefined class रे एटा जीवो. बुझियो छी the flow layout गोटे क्लास ता पे सेपरेट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम रे दिया हबो ना खाली मेंशन कर दिया हबो खाली ए क्लास टा को खाली मेंशन करा हबो. तमे देखियो से पे हम पछले प्रीवियस वीडियो टा देखछन तार केवल मेंशन करा हबो हैला. आज ये क्लास चलला पर देखि दबो बोल से क्लास वाला पर देखते जदि किछि डाउट रहला मते इमीडिएटली कॉल करिवो हैला. आई विल क्लियर योर डाउट. बुझिला. आज्ञा सर. आज्ञा सर. जदि एठो आउ क्लास मिस करिवोनी. एठो क्लास मिस करे तमे माने यू लूज एवरीथिंग. माने जावा रो 90% थिंग तमे एठो लूज कर दिबो. सो डोंट मिस ए सिंगल क्लास हियर. बुझिला. आज्ञा सर. एते जिंस ए जो 3-4टा चैप्टर जदि रहिला तमे जदि भलसे न करिवो दैट मींस यू आर नॉट डूइंग जावा. माने एटा नॉर्मल छोटो छुआ जति की पढ़छन तमे पढ़लो किंतु एति न कल तमे होबो. बुझिला. आज्ञा सर. आज्ञा सर.
in grid back layout some kind of component we're using. One is grid X, grid Y. Okay, grid X, grid Y, fill, anchor, grid width, grid height, weight X and weight Y. So these are the components we are using. One is grid X, grid Y, fill, anchor, grid width, grid height, weight X, weight Y. So these are the grid back layout manager we are using. Okay. ଆଜ୍ଞା Okay. Then box layout arrange the multiple component either vertically or such as a stack or such as a row. माने मु जो बॉक्स लेआउट गुडा अछि मु पास करिवि x axis, y axis, line axis and page axis. So these are called as the box layout. X axis, y axis, line axis, page axis. Okay, so first मु grid back constraint को जाउची. तो बॉक्स लेआउट रे जो कंपोनेंट हमें ऐड करिवा आइदर x axis रे शो करिवो कंपोनेंट गुडा का और y axis रे रहिवो और line axis, page axis means चारटा फॉर्मेट रे हमें लेआउट मैनेजर दे परिवा बॉक्स लेआउट रे. Then group layout is used to various user component means हमें जदि किसी related component को गोटे जगह रे प्लेस करबा को चाहू छे. ओके जेमति कि हमें लिखि दवा फूड बोली गोटे लेबल बनेवा ता अंडर रे लिखिवा वेज नॉन वेज ता भितरे वेज नॉन वेज अंडर रे आउ जहा सब कंपोनेंट अछि ताको डिस्प्ले करिया को चाहू छे तो से जगह रे हमें लिखिवा ग्रुप लेआउट मैनेजर. Each group may contain any number of element where element can be a group, the user component or a gap. Group layout define the layout for both horizontal axis and vertical axis. So we can define both horizontal axis and vertical axis. Then now we have that like the this is the group layout manager. It is B1, B2, B3 is one group. Here B3 and B4 is another group. Okay. बुझिला ସେ जो B1 B2 एटा कोन कहले एटा होची गोटे गोटे बटन कहि परिबा बा गोटे गोटे कंपोनेंट आमे कहि परिबा. बुझिला ଆଜ୍ଞା सर आ जो ग्रुप लेआउट जोटा हम पढुछे सेटा भी गोटे क्लास माने प्रीडिफाइंड it क्लास is a layout. You can it is a predefined class. हां हां सेटा खाली मेंशन कर देले से क्लास नेम मेंशन कर देले सही हिसाब रे लेआउट फॉर्म हो. हाँ से वरे layout आसी. हम्म So if you do not want to use any kind of predefined layout manager, जो group layout, grid layout, border layout, एई जदि एई सब layout manager मु जदि यूज करबा को चाहुनी ताले मु लिखिबी set layout bracket भितर null पास करिवि. Set layout null means here where I am not adding any kind of layout, then manually you have to add the layout manager. मु manually सेठी layout टा यूज करिवि. बुझिला जदि मु प्रीडिफाइंड लेआउट न यूज करिवि त मैनुअली मते सेठी पास करिया को पड़िबो. Okay, so now I am showing you the program.
मैं एटा रन करछि तापर हम देखिबा okay it is called as the grid back layout manager name comments okay then okay এটা रो आउ कॉलम रे रखिबो प्लस as well as हमें जदि स्पेस चाहिए देखो सबमिट पर गोटे स्पेस अछि एटा रहउछि एटा पूरा रो आउ कॉलम वे रे देखौनी हमको बुझे होछि आज्ञा सर सेटा हमें जो कमांड प्रॉम्प्ट रे से येटा को एंटर करले से डायरेक्टली से बॉक्स टा खोलियला हां हां आउ किछ करियो पड़ले नहीं एटा ऑटोमेटिक रन हो हमें ये करबा ने काम करबा दरे डायरेक्ट बुझे होछि हम्म सर हमें एतोडा जिंस कोन कोन करछु सब बतौछि गोटे गोटे करके एटी असला में ग्रिड बैक लेआउट एग्जांपल इट इज एक्सटेंस फ्रॉम फ्रेम हमें जे तो AWT पैकेज यूज करूचे तो ग्रिड बैक लेआउट एग्जांपल इट इज एक्सटेंस फ्रॉम फ्रेम क्लास ओके हमें फ्रेम रो ऑब्जेक्ट एटी बनेने डायरेक्ट हमें फ्रेम क्लास रो एक्सटेंड कर देले ता माने फ्रेम रो जो फंक्शनैलिटी अछि हमें ग्रिड बैक लेआउट एग्जांपल रे ताको यूज करि परिबा तापर एटु मठी लेबल देली लेबल रो ना हला नेम जोरा देखौ जे एटी लेबल ए लेबल टा हला नेम टेक्स्ट फील्ड रो एटी साइज दे हला 10th लेंथ साइज हला 10 तापर मोटे लेबल ऐड कले कमेंट्स ए कमेंट्स रे मोटे टेक्स्ट एरिया यूज कले okay so it is a text area where it have the 6 row and 15 column 6 row और 15 column रहला बुझेला तापर गोटे बटन यूज कले बटन सबमिट न्यू बटन एटे सबमिट बटन यूज होला
तापर एठी यूज से करा न्यू बटन करके हमें ये काई करले माने सेटा कोन हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करले की ऑब्जेक्ट क्रिएट करले बटन इज आल्सो ए क्लास प्री डिफाइंड क्लास ओहो सब गुडा पय तले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूचे एवरीथिंग इज ए क्लास ना आइदर इट इज कंपोज हमें पढ़ले ने कि एडब्ल्यूटी रे आइदर इट इज कंपोज्ड और एक्सटेंडेड अच्छा बिना ऑब्जेक्ट तले काम करी होबनी ना बिना ऑब्जेक्ट होबनी ओहो आज्ञा सर तापर एठी रहला टेक्स्ट फील्ड लेबल रहला कमेंट टेक्स्ट एरिया न्यू टेक्स्ट एरिया बटन सबमिट ओके गोटे मिनट तापर मु एठी यूज कले कोन लेबल न्यू लेबल एटा गोटे फ्रेम रो ना रहला टेक्स्ट एरिया रहला तापर एठी लेबल गोटे रहला कमेंट तापर एठी बटन रहला टेक्स्ट एरिया रो 6 रो 15 कॉलम रहला तापर हमें एठी लेआउट मैनेजर देले कोन ना ग्रिड बैक लेआउट बुझला ग्रिड बैक लेआउट मैनेजर एठी डिफाइन करा हला तापर हमर जो लेबल गुडा को सब ऐड करबा तार पोजीशन सब डिफाइन करला 00 1100 टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट नेम 101120 रहला लेबल कमेंट कमेंट पई तार पोजी इगुडा सब पोजीशन दिया हला जीरो माने कोन जीरो माने देखो एटा हला जीरो पोजीशन एटा हला 1 पोजीशन नेम टा टेक्स्ट नेम टा आसीला सेमते एटा हमें आसीले कोन लेबल जीसी माने लेबल कमेंट पुनी जीरो पोजीशन रहला 0 रो 1 कॉलम माने एटे 1 कॉलम एटा रहला सेमते एटा होची 1 रो 1 कॉलम एटा कोडा रहला टेक्स्ट कमेंट टा बुझे होची आज्ञा सर आ एटा हला बटन बटन टा 0 1 2 एटा हला 0 रो 1 रो 2 रो तेनो एटे रहला कोन जीरो पोजीशन माने फर्स्ट पोजीशन रो 2 कॉलम रे हमर रहला सबमिट बुझेला आज्ञा तापरे ए जो कंपोनेंट सब गुडा का ऐड हला ए कंपोनेंट गुडा का हम एठी रजिस्टर कले ए जो 0 1 2 सब हमें पास कले ए वैल्यू गुडा का हमें ग्रिड एक्स वाई डब्ल्यू हाइट वेट आदि इनिशियलाइजेशन कले इनिशियलाइजेशन कला पर से कंपोनेंट गुडा का हमें सब ऐड कले ऐड कंपोनेंट देन जीसी बुझेला आज्ञा Okay. सर से जो जीसी टा कोन थिला ऑब्जेक्ट ग्रिड बैक जो ग्रिड कंस्ट्रेंट रा ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन कले अच्छा अब ए जो ग्रिड हमें जो ग्रिड एक्स ग्रिड वाई एगुडा काहे कि हमें मेंशन करछे हमें जो हमें एटा कोन रो आउ कॉलम फॉर्मेट रे रहउची एटा होची वाई एटा होची एक्स कॉलम एक्स रे कोठी रहइबा वाई पोजीशन टा कोन वाई टा होची कॉलम एक्स फॉर रो ओके आज्ञा तो केतरा रो केतरा कॉलम थिला 0 1 2 एटा हला फर्स्ट हला 0 एटा हला 1 एटा हला 2 बुझे होची Okay. ओके तो हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ दीटा लेआउट पढेबा तापर मु इवेंट हैंडलिंग प्रोग्राम को जीबे हैला आज्ञा सर ठीक है चलो सर एचटीएमएल टा हबो ना आज नै एचटीएमएल काली ओरे दिन छाड़ी काली हो 17 बजे
Java Yes. Satra Chats. Okay. ଆଜ୍ଞା sir, ଆଜ୍ଞା, thank you sir.